So, any, in fact, scattering experiment which involves microparticles, we do not have an access to exact orbit x of t. What only we have an access to is are the asymptotic states, that is asymptotic in state and asymptotic out state. And this statement that we do not have an access to the exact orbit, this is justified by considering equation 2. क्या मतलब, that is the rate of change rate of change of phi, that is the angle, depends depends inversely to the radial distance. Radial distance of the particle. इसका क्या मतलब है? Meaning, अगर, so if for example phi would be well defined, अगर particle is very far away, hence uh, angle phi is well defined if the particle is very far away, yeah, from the scattering center, from the origin, yeah, uh, that is that is that is before collision. And before collision phi would be equals to 0, and after collision uh, phi would not be equals to 0. Therefore, दूसरे लफ्जों में हमारा काम क्या है यहाँ पर, कि we want to find the deflection angle theta, which would be the function of impact parameter and the velocity of the incoming particle. So therefore the task of scattering theory is to find or determine deflection angle theta as a function of impact parameter and velocity. In this case, velocity would be the energy of the velocity, meaning you're talking about the energy of the incoming particle. Yeah, that is basically what is in fact required in this uh, experiment. Now we can, if we want to determine the deflection angle, then from the figure deflection angle can be obtained. So if you go back to the figure above, जो हमने ड्रॉ की थी शुरू में, सो इस फिगर के लिहाज से देखें, अगर मुझे ये एंगल निकालना है थीटा, देन दिस थीटा एंगल वुड बी इक्वल टू, किसके बराबर होगा? टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक कितने किसके बराबर है? दैट इज पाई। और अगर इस पाई में से ये एंगल और ये एंगल मैं माइनस कर दूं, ये परपेंडिकुलर है, सो दिस इज सम एंगल
which is a function of A, and this is some angle which is a function of A. And so if I subtract these two angles or two times this angle, then we would get the deflection angle theta. So the deflection angle here now can be obtained. So from the figure, the deflection angle theta can be obtained, can be obtained uh, from the angle, from the angle corresponding to your uh, closest distance of closest approach or point of closest, corresponding to the point of closest approach A. या सो इसका मतलब है थीटा जो है दैट वुड बी इक्वल्स टू पाई माइनस 2 times phi as a function of A. ये हमें निकालना या and now in order to compute phi हमने अभी देखा था phi basically is a function of radial distance, that is phi is a rate of change of the radial distance of the particle from the scattering center. So to compute हमें क्या चीज निकालनी चाहिए to compute phi, क्योंकि इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर ये इक्वेशन नंबर लेट से 3 कह दें, इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हमें फाई कैलकुलेट करना चाहिए. अगर हम फाई कैलकुलेट कर लें एज अ फंक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, देन हम थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं. सो व्हाट इज फाई? फाई हमें मालूम है फाई इज अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस. सो कंप्यूट फाई ऑफ ए हमें क्या मालूम करना चाहिए? वी नीड टू थिंक हाउ द फाई इज चेंजिंग एज अ फंक्शन ऑफ आर. सो वी नीड to know how phi is changing as a function of r. Yeah. So इसका मतलब है दूसरे लफ्जों में what we need to find out is d phi by dr. Yeah. And this d phi by dr कैसे निकाला जा सकता है? So d phi upon dr निकाला जा सकता है as d phi over dt and dr over dt. Yeah. So that is, we can differentiate uh, phi as a function of time, and we can differentiate r as a function of time. न्यूमरेटर इस इक्वेशन के अंदर, लेट्स से इस इक्वेशन को अगर मैं फोर्थ इक्वेशन कह दूं, तो इस इक्वेशन के अंदर जो न्यूमरेटर है दैट इज डी फाई बाई डी टी, वो मालूम किया जा सकता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की मदद से. उस इक्वेशन के अंदर इफ यू रिमेंबर दैट इक्वेशन नंबर 2, सो the the numerator in equation 4 can be obtained using equation 2, i.e. the conservation of angular momentum that is क्या निकाला जा सकता है? that is d phi upon dt is equals to किसके बराबर? There we have mvr, if you remember, mvb upon mr square, और ये किसके बराबर है? that is l upon mr square के. तो ये this is equals to mvb upon mr square, and d phi by dt is also equals to l upon mr square. Both दोनों बराबर है. Yeah. So we can either use this quantity or we can use this quantity in some later equations. Yeah. So that is the value of the numerator. Now denominator कैसे निकाल सकते हैं? Conservation of energy की मदद से. The
denominator can be obtained from the law of conservation of energy, law of conservation of energy. That is, we have E, which is equals to half mv square, और in this case let's say क्योंकि हमें r की फॉर्म में लिखना है तो हम इसको r की फॉर्म में लिख सकते हैं. That is, this is the this is the rate of change of radial distance. V is the rate of change of radial distance, जिसको r बार से जाहिर कर दें, प्लस हाफ m r phi prime का स्क्वायर plus v of r. So this is the linear velocity, this is the angular velocity, this is the kinetic energy, and this is the potential energy. And so one can write this equation as 1 upon 2 m r prime का square plus ये जो phi phi prime है, phi prime is d phi by dt. Yeah. So we know that L बराबर है किसके, m एम आर स्क्वायर डी फाई अपॉन डी टी, यानी दूसरे लफ्ज में एम आर स्क्वायर और फाई प्राइम. सो मैं फाई प्राइम निकाल सकता हूँ विच वुड बी इक्वल्स टू किसके बराबर, दैट वुड बी सम वैल्यू जो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट वुड बी एल स्क्वायर अपॉन 2 एम आर स्क्वायर, बिकॉज ये क्वांटिटी होल स्क्वायर के अंदर है ना. सो ये क्वांटिटी जो है दैट वुड बिकम एल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स एम आर स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर. ये हमारे पास ई की वैल्यू आ गई ना. इस ई की वैल्यू को हमें निकालना, यानी हमें आर प्राइम निकालना है, डी आर अपॉन डी टी निकालना है, द डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन नंबर 4. सो हम इसको रीअरेंज कर लें, सो दैट वुड बी हाफ एम आर प्राइम का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ई माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स एम आर स्क्वायर माइनस वी ऑफ आर, दिस इक्वेशन. और सिंप्लीफाई कर लें और रूट ले लें, सो आर प्राइम यानी दिस आर प्राइम इज डी आर ओवर डी टी के बराबर है. दैट वुड बी इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट, फैक्टर कौन कौन से, ई माइनस वी ऑफ आर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2 एम आर स्क्वायर टाइम्स 2 अपॉन m whole under root. And this, so this equation, ये इक्वेशन ई की हम इसको 5 कह दें और इस इक्वेशन को हम 6 कह दें. बोथ इक्वेशंस विल बी यूज्ड in future. So we have in fact dr upon dt, which is basically the value of the denominator. यहाँ पर जो साइन आपको नजर आ रहा है, इस साइन की भी अहमियत है, दैट इज द प्लस साइन एंड द माइनस साइन. सो माइनस साइन या प्लस साइन हम इस तरह से चूज करेंगे, that is we are considering either outward motion, then that would be a plus sign, or agar there is an inward motion, that the beam of particle or the particle is coming towards the target, then the sign would be a negative sign. So in fact the sign of kiska, r prime means dr upon dt, is chosen depending on whether we are considering an outward motion, then that would be plus sign, or an inward motion, that would be a minus sign of the particle. Yeah, so this is basically the meaning of plus and minus in equation number 6. Therefore,
फ्रॉम इक्वेशन 4 अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो हमारे पास डी फाई अपॉन डी आर की वैल्यू आना शुरू हो जाएगी। देयरफॉर देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, जिसमें आप डी फाई अपॉन डी आर निकालना चाह रहे थे, तो डी फाई अपॉन डी आर किसके बराबर हो जाएगा? न्यूमरेटर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, डिनोमिनेटर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो हमने निकाली थी एल, न्यूमरेटर की वैल्यू थी एल अपॉन एम आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर की वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 6 है। सो न्यूमरेटर की वैल्यू एम आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर है प्लस माइनस अंडर रूट ई माइनस वी ऑफ आर, ई माइनस वी ऑफ आर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2 mr स्क्वायर इंटू 2/m। अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर लें। किस तरह से? टेकिंग लेट्स से L इज इक्वल्स टू एम वी बी एंड E बराबर है काइनेटिक एनर्जी, दैट वुड बी हाफ mv स्क्वायर। सो अगर ये मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दूं, और सो मेरे पास क्या आ जाएगा? सो आई कुड थिंक अबाउट डी फाई बाई डी आर इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? दैट इज एम वी बी एल की वैल्यू अपॉन mr स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय प्लस माइनस। अगर हम लें, अगर मैं ई कॉमन ले लूँ, सो ई डिनोमिनेटर रेडिकल साइन के नीचे अगर ई कॉमन ले तो द 1 माइनस वी ऑफ आर अपॉन ई आ जाएगा पहले टर्म में, और माइनस दैट इज एल स्क्वायर अपॉन 2 mr स्क्वायर पहले से मौजूद है, और 1/e यहाँ पर आ गया, ये ब्रैकेट क्लोज, और देन वी हैव 2/m पहले से मौजूद है। सो दीज आर द क्वांटिटीज जो हमारे पास मौजूद हैं। ई की वैल्यू अब मैं सब्सटीट्यूट कर दूं एज हाफ mv स्क्वायर। सो ई की वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट की जाए, सो दिस वुड बी m वी बी अपॉन mr स्क्वायर, एंड देन सो प्लस माइनस लिख दूं यहाँ पर, देन रेडिकल साइन में ई की वैल्यू हाफ mv स्क्वायर, और क्या बचा? 1 माइनस वी ऑफ आर इंटू ई माइनस एल की वैल्यू एल स्क्वायर है तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर बी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? और हाफ एम वी स्क्वायर टाइम्स 2 mr स्क्वायर, दिस इज होल मल्टीप्लाई बाय 2/m। या सो कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, ये m और ये m इससे और इससे कैंसिल हो गया। इधर भी आपके पास, सो ये m और ये m स्क्वायर से कैंसिल होगा, और ये वी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो वी वुड हैव टर्म्स विच इज प्लस माइनस, इधर भी ऊपर भी m और m कैंसिल हो जाएंगे। सो वी वुड हैव क्या चीज़? वी बी होल डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पर एक और चीज़ भी कैंसिल हो रही है। सो इसमें वी स्क्वायर है, सो ये वी बाहर आ जाएगा रूट से, रेडिकल साइन से, और हमारे पास जो अंदर टर्म्स बचेंगी वो बच जाएंगी 1 माइनस वी ऑफ आर अपॉन ई माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये क्वांटिटीज। ये सो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कैंसिल हो गई।
सो क्या बच रहा है आपके पास? दैट वुड बी प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी ऑफ आर अपॉन ई माइनस बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये क्वांटिटी। सो इसके अंदर आप जो देख रहे हैं वो हमने इनफैक्ट डी फाइव बाई डी आर निकाल लिया एज अ फंक्शन ऑफ बी, दैट इज द इम्पैक्ट पैरामीटर। या सो अगर इफ इट इज अ फंक्शन ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर दैट इज डी फाइव अपॉन डी आर, ये आ गया आपके पास प्लस माइनस बी अपॉन कुछ वेक्टर। ओ, आपके पास न्यूमरेटर के अंदर, न्यूमरेटर के अंदर यहाँ आर भी है। सो ये अगर गौर करें ये आर स्क्वायर है। सो आर स्क्वायर जो है वो नीचे आ जाएगा। सो मैं इसको यहाँ आर स्क्वायर लिखूँ, सॉरी, इस वाली टर्म के अंदर यहाँ आर स्क्वायर आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में एक आर स्क्वायर भी आएगा, ठीक है ना। सो दिस वुड बी आर स्क्वायर, तो यहाँ पर भी आर स्क्वायर। So that would be 1 minus V of R upon E minus B square upon R square। ठीक है, तो R square बाहर है, ठीक है, खत्म नहीं हुआ। Okay, now how to sort of, so this equation can be written as d phi, which is plus minus dr into b whole divided by some factor जो कि denominator में है, which is r square under root 1 minus v of r upon e minus b square upon r square, ये क्वांटिटी। और अगर इसको नाउ इंटीग्रेट करें तो वी वुड फाइंड द एंगल फाई। Now, to find the angle phi as a function of A, we have these two, in fact, integrands, एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ। या सो इट इसका मतलब हो गया कि प्लस और माइनस के साथ होने का, इंटीग्रेंट होने का मतलब ये कि वी हैव टू इंटीग्रेट वन इंटीग्रल एज अ प्लस एंड द अदर इंटीग्रल एज अ माइनस। सो how can we do that? So let's first of all write it as phi as a function of a। और अगर phi as a function of a लिखेंगे तो you have to write it as phi minus infinity to plus infinity, and from minus infinity to plus infinity we have two terms, when minus infinity to a and a to plus infinity। या सो दो टर्म आ जाएंगी आपके पास। सो माइनस एंड प्लस infinity को हम जस्ट infinity अगर लिखें, so for now what can be done is plus minus integral dr, so we would be doing from minus infinity to plus infinity, yeah, and that is b upon, the integrand would be uh, r square, which is 1 minus v of r upon e minus b square over r square bracket close. So this is basically the integral. Therefore, the deflection angle, so this is deflection angle theta as a function of uh, of point of closest approach. Yeah, and how can we do that? We could then write theta, which is equals to pi plus minus 2 times integral minus infinity to plus infinity dr b over r square under root 1 minus v of r over e minus b square over r square bracket close. And now you can write two terms, two equations, one with the plus sign and the other one with the minus sign. So theta would be equals to pi plus 2b
and that would be integral from minus infinity to a. So इसको मैं just infinity कह दूं to a, the distance of closest approach, dr into 1 upon the integrand would be r square integral 1 minus v of r over e minus b square upon r square. And the other equation would be with a minus sign, and theta is equals to pi minus 2b, and that would be a to infinity. So from minus infinity to the point of closest approach where the velocity, radial velocity is 0, which is at a distance a from the origin. That is this equation. And then for the other, that is outward motion के लिए, that would be 2b a to infinity dr into 1 upon integrand r square, which is 1 minus v of r over e minus b square over r square. Yeah. So this is this equation. So these two above expression for theta, they are obtained for using the inward and outward type of motion. Yeah. So the above two expressions uh, expressions for theta are obtained by using the inward and outward type of motion, types of motion. Yeah. So these are the two. Now दूसरे the point of closest approach a कौन सा डिस्टेंस है जहां पर बेसिकली डी फाई बाई डी आर किसके बराबर है, जीरो के बराबर. सो जो इक्वेशन नंबर 6 है उसमें आर प्राइम सॉरी डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो. सो इक्वेशन नंबर 6 के अंदर जो हमने लिखी है उसमें आर प्राइम इज इक्वल टू जीरो रखते हुए हमारे पास क्या आ जाएगा, the point of closest approach A is calculated using equation 6 by requiring, क्या requirement है, that is r prime सिफर के बराबर, that by requiring that dr over dt which is r prime is equals to किसके बराबर, जीरो के बराबर. इसका मतलब जीरो would be equals to e minus v of a, क्योंकि v of r है तो v of r का मतलब है एट डिस्टेंस पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r बराबर हो जाएगा किसके, a के, माइनस एल स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू किसके बराबर, 1 माइनस v ऑफ a, e से डिवाइड कर दें अपॉन e, बाकी सब सिफर हो जाएंगे, जीरो लेफ्ट हैंड साइड पर सिफर से मल्टीप्लाई, माइनस b स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर. सो दिस इज बेसिकली द, यहाँ से हम ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी एक अगर आप चाहें तो ए भी कैलकुलेट किया जा सकता है. सो बेसिकली ये हमारा बुनियादी कॉन्सेप्ट आ गया. Now, अगर that is in fact what is the classical approach. So अगर मैं correspondence बनाना चाहूँ, correspondence between classical description and quantum description of the scattering, then the deflection angle जो होगा, जो हमने यहाँ पर निकाला है, उसका classical analog would be that is a scattering matrix, S matrix, जो हम calculate करेंगे इस कोर्स के अंदर, sorry इस आर्टिकल के अंदर. So what is the correspondence here? The correspondence between classical description and quantum
description of scattering theory is as under क्या है? Number one, the deflection angle. डिफ्लेक्शन एंगल जो आपने अभी निकाला है, एंगल थीटा. डिफ्लेक्शन एंगल थीटा is the classical analog of the of the of the scattering matrix. और एस मैट्रिक्स जो हम निकालेंगे, ये एक बात हो गई इन द क्वांटम थ्योरी, इन द क्वांटम स्कैटरिंग थ्योरी. या दूसरी बात, जो इन एंड आउट एजम्प्टोट्स हैं, दे करस्पॉन्ड टू द एजम्प्टोटिक क्वांटम स्टेट्स ऑफ द पार्टिकल, and they are basically which in fact those states which propagate forward in the forward direction and in the backward direction in time. Yeah? So the in oblique out asymptotes they correspond to the asymptotic quantum states of the particle which are basically propagated forward oblique backward in time into the interaction region. Yeah. And so इसकी मदद से, दैट इज, अगर हम दोनों की मदद से दी जो इनफैक्ट स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है, दैट वुड बी ऑब्टेन एज देयर ओवरलैप. द scattering amplitude will be obtained as an overlap, as their overlap rather. दैट इज इन फॉरवर्ड, जो आपके इन स्टेट है और आउट स्टेट का जो ओवरलैप हो रहा है, इनफैक्ट जिस जगह पर इंटरेक्शन हो रही है, सो दैट इंटरेक्शन वुड correspond to an overlap between the in asymptotic quantum state and out asymptotic quantum state as their overlap. ठीक है ना? तो इसका मतलब ये बात समझ में आई कि व्हाट डज interaction between incoming beam of particles and target particle correspond to an overlap of the in and out asymptotic states.
in and out asymptotic quantum states. ये चीज हम निकालेंगे जब हम इसकी क्वांटम डिस्क्रिप्शन डिफाइन करेंगे. या ओके, सो दिस इज in fact a general idea about how you, in fact, start from classical theory and what in classical theory corresponds to the concepts or parameters in quantum theory. That is what we have done. अब थोड़ी सी हम इसकी general properties लिखेंगे, general properties of collision. और ये general properties of collision are important. Why? Because they give you an idea about different types of potential. So if similarly potential, large potential, or small potential, short range potential, long range potential, and so on. And using this description potential का properties का collision की properties का we would come up with the idea of potential energy surfaces. ठीक है ना? So अभी